Hello students, how are you? I hope you are fine. So now let's start a new class. So in this class, I want to explain you some important points which are of this chapter. Okay, beta. So now on this screen, you can find a heading variables and assignments. Can you find this heading? So beta, what is the meaning of variables and assignment here? Actually, variable which can store some values, that is called variable. In simple way, we can say like this: the variable is like this. We can use. Suppose here I write a is equal to 9. Suppose I write. So here in this case, a is a variable. Okay, a is a variable. 9 is a value and is equal to is the operator. And complete meaning of this line that value 9 is assigned to a, or you can say value 9 is assigned to a variable. So here a is variable, 9 is value, and is equal to sign is an operator which is used to assign a value. Okay, so this is the meaning of variables and assignment. Okay beta, a is equal to 9 like this. If I print this value, then how can this be done? You know, यहाँ पे a लिखे and simply when I execute this, you can find this output. आप देख सकते हैं राइट साइड में इसका आउटपुट 9 है. ओके बेटा, वेरिएबल एंड असाइनमेंट. अब देखिए सम अदर थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दिस पॉइंट. इनफैक्ट क्या होता है कि वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल इज अ label for a memory location where value is stored. For example, यहाँ पे जैसे 9 है, 9 is stored in a memory location. At a particular memory location, you can find 9 is there. Okay, in memory, a particular memory location or you can say memory address is there for 9, and that address is labeled by 9 a. ये जो variable a है, this variable is used as a label for that location at which location 9 is there. Okay बेटा, so this is the complete meaning. अब यहाँ पे जैसे इसको मैं प्रोग्राम को कमेंट बना रहा हूं, then I execute some other parts of this screen. Try to understand the meaning of these lines. यहां पे बेटा देखिए मैंने क्या लिखा है. Here I have written a is equal to 10, b is equal to 10, c is equal to 10. It means there are different names of variables but values are same. Okay, so values are same means कि all these values are at same memory address, or you can say all these values are at same memory location or same memory address. Okay, and all those values will be referred by a, b and c. It means वो जो same memory है, label for that same memory is a, b and c. And how can you find this? How can you find this that they all are referring same memory location? So for this I can use line number 13. Print id in bracket 10. id मैंने लिखा using id and 10 is the value. So what is the address for 10? What is the memory address for the 10? That will be displayed by using id. अब देखिए id से 10 का एड्रेस मिल गया. Then the same value is in a, तो a से भी हमको सेम एड्रेस मिलना चाहिए. Then b में भी सेम वैल्यू है. It means address whatever in b, that must be same. Similarly address of c must be same because all these variables are storing सेम वैल्यू, और सेम वैल्यू के लिए मेमोरी लोकेशन जो है वो सेम होगी. ओके, तो पहले इस पोर्शन को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं बेटा. now you can find beta for a b c and for 10 same
A, B and C. 4 values will be same. Output में देखिए 1, 2, 3 and 4. These 4 values are same. ये जो values हैं, these values are representing their memory location internally. It is internal storage. ये Python का अपना internal work है. तो इसने ID ने आपको using ID you can find the internal location of the value in memory. ये मिल रही है आपको सारी वैल्यू, बट एक लास्ट वैल्यू है जो आपको देखिए देयर इज डिफरेंस इन लास्ट वैल्यू. प्रीवियस 4 वैल्यूज आर सेम इन ऑल द वेज, बट लास्ट फिफ्थ वैल्यू इज डिफरेंट. व्हाई दिस वैल्यू इज डिफरेंट? बिकॉज इन C वेरिएबल आई हैव असाइंड 40. So 40 is a different value. It means there is different memory location for 40. Okay. So now when I print this C, ID of this C, now you can find a different value. It means now this time the level C है that is for different value, for different memory location. Okay. So this is the way using which variables are assigned and you can find addresses of those values. Okay beta. Now I make all these lines comment and try to execute other part of this screen. यहां देखिए बेटा, you can find multiple assignments. मैंने इन पॉइंट्स को जो डिस्कस करने हैं उनकी हेडिंग्स बना दी हैं लाइन पे. ये हैश के थ्रू मैंने उन टॉपिक्स को लिख दिया है which I am going to explain. Okay, so firstly you see the topic, then you try to understand what is the meaning of given code related to that topic. Okay बेटा. अब देखिए now multiple assignment, इस पोर्शन को हम ओपन करते हैं. Now multiple assignment, in multiple assignment you see beta R is equal to S is equal to T is equal to 20. It means in multiple assignment there are different variables but we are assigning same value all these different variables like this in one line. This is called multiple assignment. Okay beta, जो line number 20 पे है, this is called multiple assignment and we can print the values of all these variables like this 20 20 20. तो यहाँ पे अगर हम ID R और S T सबकी करेंगे तो ID will be same. Okay बेटा, so this is multiple assignment. Now I am going to make comment these lines. See heading at line number 22 बेटा, multiple values to multiple variables. क्या लिखा हुआ है? Multiple values to multiple variables. अब यहाँ पे देखिए इस कोड को बेटा and try to understand. P comma Q is equal to 7 comma 8. It means 7 is for P and 8 is for Q. Okay, so if you want to print these values we can type a statement like P comma Q. तो देखिए 7 और 8 मिल गई आपको वैल्यूज. ओके बेटा, कोई कंफ्यूजन? तो एक्चुअली जो हेडिंग्स हैं ये आपकी बुक के टॉपिक्स हैं जो मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. इसके बाद इनके नोट्स भी दे देंगे हम आपको. Now beta see variable definition. Next topic is variable definition. Here what is the meaning of this line? Actually beta देखिए इसका आउटपुट पहले देखिए. I write print x. I write print x. Actually I think some values are for x assigned here. That's why you have got this output. Is there any value for x? एक्चुअली मेमोरी में मैंने पहले रन किया था तो एक मेमोरी में इसकी वैल्यू पहले से असाइंड है. जैसे मैं x की जगह पे यहाँ पर कोई अदर वेरिएबल ले लेता हूँ. मान लीजिए pp ले लिया मैंने, एक pp वेरिएबल है. ओके, या अभी नहीं ले रहे हैं. यहाँ पे मैंने लिखा pp, x की वैल्यू मेमोरी में पहले से वो ले ली है. जैसे एक मैंने डिफरेंट वेरिएबल लिया pp and if I try to print this, now you find an error. Name pp is not defined actually.
तो वेरिएबल के लिए पहले वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज इट। ओके, जैसे मैंने बताया अभी हम यूज कर रहे थे x, इवन मैंने x की वैल्यू यहां नहीं ली है बट x की वैल्यू दिखा रहा है बिकॉज बिफोर दिस आई हैव यूज्ड समवेयर वैल्यू ऑफ x। क्योंकि यहाँ पाइथन में क्या करता है बेटा, जो भी वैल्यूज हम यूज करते हैं अगर पहले वैल्यू यूज की है तो उससे रिलेटेड एक लोकेशन फॉर्म हो जाती है। तो वेन एवर यू ट्राई टू यूज दैट वेरिएबल, okay, so that variable can access that location for which you had assigned any value। तो यहां पे अगर नया वेरिएबल ले रहे हैं और उसके लिए कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है कभी भी पहले इस प्रोग्राम में, इट मींस there will be an error, name pp is not defined। so it means before using any variable we must define a value like this, suppose pp is equal to 0 अब मान लिया आपने दे दिया, तो अब आप इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे pp is equal to 0 हमने दे दिया और यहां पे हम इसको हैश बना दें तो ये कमेंट हो गया, ये लाइन तो है नहीं, अब pp लिखा आपने। अब देखिए इससे पहले आप pp प्रिंट कर रहे थे, देयर वाज एन एरर। व्हाट वाज द एरर? दैट नेम pp इज नॉट डिफाइंड। बट अभी भी आप देखिए pp इज इक्वल टू 0 आपने लिखा और इसको कमेंट बना दिया, इट मींस कि अब इसका कोई एग्जीक्यूशन में रोल नहीं है। बट नाउ यू आर नॉट गेटिंग दैट टाइप ऑफ एरर। व्हाई? मैंने बताया था ना, प्रोग्राम में अगर वेरिएबल एक बार यूज हो गया है, पहले आपने एग्जीक्यूट कर लिया, तो दैट इज इन मेमोरी लोकेशन, in memory a location has been created for that। okay, so now whenever you will use after that there will be no error। okay beta, so have you got the meaning of line number 26 and 27? okay, now next topic is dynamic typing। now see what is the meaning of this heading, dynamic typing। इसके लिए इस प्रोग्राम कोड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, that what is the meaning of dynamic typing। डायनेमिक टाइपिंग में देखिए बेटा, x is equal to 10, you know that 10 is an integer type of value, and in next x same variable we are using different type of value which is of string। so that is हम same variable में different data type की value को store कर सकते हैं, this is called dynamic typing। okay बेटा, this is called dynamic typing। अदर लैंग्वेजेस जैसे जावा, C++ है, उनमें ऐसा नहीं होता है। वहां if we declare a variable of integer type, in that variable we cannot input string type of value, or in string type of value we cannot input integer type of value। so in other languages that is done, but here some differences are in Python। तो आप Python रीड कर रहे हैं तो Python के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो in Python क्या है, x is equal to 10 is integer value, so in x we can also give a string type of value, this is called dynamic typing in Python। now see beta, there will be no problem in this case। but मैंने जो लिखा है type x then type x, तो पहले जब type x लिखा है then you find int and in next you can find str, it means next for string and first one is for integer। okay बेटा, तो इस तरह से some topics which are important and given in your book in your chapter। okay, so those topics I have explained, now you can find and execute। so now you should try to execute all these lines beta। okay, I will send this program in your group and after this I will give you some notes which are based on these topics। okay, so now you have to try to understand the meaning of these codes। okay, now I am going to stop this video।